Greetings students, welcome to my class. Students, I hope you all are fit and fine, and I hope the same for your family members. Students, in the previous class we started the second chapter of your English textbook First Flight, and the name of the second chapter is Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. In the previous class I gave you the brief introduction of the chapter, as well as I told you we did some explanation of the chapter also, and oral comprehension check questions and their answers were left to discuss. Now we will discuss in this class also, and we will do the further explanation. But before that, I told you in the previous class about Nelson Mandela. Who was Nelson Mandela? Why did he spend 30 years of his life इन द प्रिजन? क्यों जेल में 30 साल बिताए उन्होंने? बहुत अत्याचार सहा. ही suffered a lot where he was beaten badly also, because there was a system in South Africa established by their own people who were fair in color. They established the system which was called apartheid, not apartheid, apartheid, and that lasted there for more than 300 years, my dear students, and he fought against that. And on 10th May 1994, which is very important date according to Nelson Mandela in his life, because on that day he became the first black president of South Africa. पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे वो 10 मई 1994 को. And where did that ceremony take place? It took place in amphitheater, which was a sandstone building, Union Buildings of Pretoria. वहाँ पर ये हुआ और वहाँ पर ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई, जहाँ पर 140 देशों से ज़्यादा के सम्मानित व्यक्ति, नेता, सम्मानित व्यक्ति और बहुत ही खास व्यक्ति आए थे उस सेरेमनी का हिस्सा बनने. एंड ही टॉक्स अबाउट दैट ऑल्सो. सो आई होप यू हैव a brief idea about the chapter. Now we will do the further explanation, but before that, my dear students, I want you all to open the books on page number 18, and first oral comprehension check questions we will discuss. The first question is, where did the ceremony take place? I just told you, you all know that, and it is written in the book also. You can find the answer. Ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Yes, Red Fort is made of sandstone, and Rashtrapati Bhavan is also made of sandstone. So that is the answer. Now the second question. Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? Autumn means when बहुत ही सुहावना दिन होता है, and the geological answer is that South Africa is situated in South Hemisphere, where May falls in autumn season. So that's why 10th May 1994 is an autumn day. And another reason another answer can be because at that day the system of apartheid was shattered, was broken, was removed, right? पतझड़ होता है, autumn means, so that tree of apartheid, the leaves of apartheid system were, they fell on that day, and it was over. That's why, and a new system was created, democratic government was formed. That's why this second reason also can be the answer, that this is how, because on that day, 10th May 1994, the apartheid system was over, it was removed, and the new democratic government was formed, non-racial government. Now the third question, my dear students. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? Now if you have revised the chapter, so the answer is very simple. He mentioned in the starting of his speech बोलता है कि an extraordinary human disaster. तो उससे क्या मतलब है? An extraordinary human disaster means the system, apartheid system, which was lasted there in South Africa for more than 300 years, where the black people, the people who were not fair in color, they were restricted from any kind of freedom or basic rights. They were tortured, they were not given any rights.
and that system lasted there for 300 years, my dear students. So that was a human disaster. Even Nelson Mandela suffered from that system. Now what does he mean by this? So he means by this only that what is the glorious human achievement he speaks of at the end. The glorious human achievement is the eradication or the destruction of that system apartheid. After 300 years that system was eradicated, the system was destroyed, the system was over, and Nelson Mandela became the first black president in that of South Africa, and that was the glorious human achievement he talks about at the end of the speech. What does Mandela, now the next question, my dear student, what does Mandela thank the international leaders for? Mandela thanks the international leader. क्यों उनको वो thank you करता है? Because it was not so long ago that South African were outlaws by many of the countries because of that system apartheid. They finished their political relationship with them, with South Africa, and on that day, 10th May 1994, over 140 countries, dignitaries, politicians, they came there and to be a part of that glorious achievement. So he thanks all the international leaders, dignitaries to come and be the part of that ceremony or that glorious achievement. Now the next question, what ideals does he set out for the future of South Africa on that day? क्या आइडल सेट करता है वो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए? द आंसर इज़ गिवन इन द book itself, my dear student. He sets the ideals that to liberate all our people, to liberate all his people or country's people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. And he also says that nobody will again experience the oppression of one by another. He says that. Now, so these oral comprehension check questions and their answers you have to write in your fair notebook, my dear students. They all are important questions. So now we will do the further explanation of the chapter. I hope you all have your books with you. सभी के पास अपनी अपनी books हैं. And now we will do the further explanation of the chapter. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So when they all were gathered there and he finishes his speech, after कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने we all lifted our eyes, उन्होंने सब ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर बहुत ही I have written you the meaning of awe here for you, feelings of respect and either fear or admiration. जब आपकी आंखें या तो उस फीलिंग से भरी होती हैं रिस्पेक्ट की या फिर एडमायरेशन की या फियर की, यहाँ पर वो सभी एडमायरेशन, they were admiring, oh when you were surprised. As a spectacular array of South African jets, South Africa jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings, like on Independence Day and on Republic Day in our country also, Air Force Day. The helicopters, the jets, they make some beautiful formation, and when we see one from our eyes, that is a moment of awe. जब हम विस्मित हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं. It was not only a display of pinpoint precision and military force. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ का सिर्फ ये डिस्प्ले नहीं था, ये शो नहीं कर रहे थे कि पिन पॉइंट प्रिसीजन बिल्कुल ही क्लोज से जा रहे हैं एंड मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. बट ये इस चीज़ का भी प्रदर्शन था कि मिलिट्री लॉयल है डेमोक्रेसी के लिए, वफादार है, ईमानदार है. टू अ न्यू गवर्नमेंट, उस नई सरकार के लिए जो भी फॉर्म हुई है.
that had been freely and fairly elected, जो स्वतंत्र और बिल्कुल ही ईमानदारी से सेलेक्ट की गई है, उसके लिए भी वो लॉयल है और ईमानदार है। सो ये सिर्फ अपनी ताकत का नहीं, उस वफादारी का भी प्रदर्शन था नई सरकार के लिए। Only moments before, कुछ सेकंड पहले ही, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. He is saying कुछ क्षणों पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले ही, the highest generals होते हैं जो ये जनरल्स, एयर मार्शल, ब्रिगेडियर, कर्नल, and their chests bedecked. I have written the meanings, my dear student. Bedecked here when to decorate, उनके चेस्ट पे मेडल्स लगे होते हैं, लगाए जाते हैं। Gone by, medals from days gone by, saluted me, चेस्ट लगे हुए हैं जो मेडल्स मिलते हैं उनको। They all saluted Nelson Mandela and pledged their loyalty, और उन्होंने अपनी वफादारी की शपथ खाई, कसम ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me, and Nelson Mandela also knowing that कुछ साल पहले ये मुझे सल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट करते, गिरफ्तार करते, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर लॉयल्टी टूवर्ड्स द fair skinned people or white skinned people of South Africa, because they were in the power, they had their own government, so their loyalty at that few years ago were with the fair skinned people, not with the Nelson Mandela or the newly elected government. But now as he has become the president, वो president बन गया है, so now their loyalty is towards him, towards the new government. So that's why he's saying कि अगर कुछ साल पहले की बात होती तो ये मुझे सैल्यूट करने की बजाय गिरफ्तार करते। Finally, a chevron of Impala jet. Chevron meaning is given, my dear students, and a pattern in the shape of V. V की shape में Impala jets ने left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. So जो Impala jet थे आखिर में उन्होंने एक स्मोक से, धुएं से जैसे बनाते हैं, ट्रेल मीन्स अ मार्क और अ सीरीज ऑफ साइन बनाते हुए, किस किस कलर से, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का उन्होंने पूरा एक साइन बनाया। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, माय डियर स्टूडेंट, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. So वो दिन उसको उस तरीके से प्रतीक के रूप में भी याद रखेगा वो कि था, उसके लिए प्रतीक था कि दो नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए कि जो एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, जो वाइट थे वो गा रहे थे नकोसी कोसी सिकेलल एंड अफ्रीका एंड ब्लैक वाज सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना गान था, राष्ट्रगान था रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, हालांकि उस दिन दोनों में से किसी भी ग्रुप को, नाइदर मीन्स ना तो वाइट स्किन पीपल और ब्लैक स्किन पीपल जो ग्रुप थे, न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, जिसके बारे में बहुत ही कम जानते थे, बहुत ही खास ओपिनियन नहीं थी। दोनों ग्रुप्स में से किसी को भी उसकी एग्जैक्ट मीनिंग्स या लर्न नहीं थे, लिरिक्स पता नहीं थे कि बोल एक्चुअली बोल क्या हैं। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, ही सेंगे, हालांकि दोनों ग्रुप्स को पता नहीं था, अच्छे से लर्न नहीं था, उसके लिरिक्स पता नहीं थे, बट सून दे वुड सून, बहुत ही जल्दी वो उसे दिल से याद कर लेंगे, बाय हार्ट हो जाएगा, एज वी नो आवर नेशनल एंथम बाय आवर हार्ट, सो दे वुड ऑल्सो नो। So now the next paragraph, my dear student, on the day of the inauguration, means on 10th May 1994, same day, I was overwhelmed. He is speaking about the same day कि मैं उस दिन पे बहुत खुश था, overwhelmed with the sense of history, you know, sense of history से भाव विभोर हो गया था, इतिहास की याद करके। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, फर्स्ट डेकेड मीन्स 1900, ही इज़ टॉकिंग अबाउट 1900 टू डेकेड मीन्स 10 year, पीरियड ऑफ 10 year, so one decade is 10 years.
He's talking about the first decade of the 20th century, a few years after the, कुछ सालों के बाद ही, bitter Anglo-Boer war and before my own birth, अपने बर्थ से कुछ समय पहले की वो बात कर रहा है, और जब बहुत ही कड़वी एंग्लो बोर वॉर हुई थी वहाँ पर, और उसके जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट वाइट स्किन पीपल्स लिखा है, एंड आई ऑलवेज टेल यू दैट वी यूज़ पीपल नॉट पीपल्स वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, बट इन एक्सेप्शंस लाइक व्हेन यू आर मेंशनिंग अबाउट सम पर्टिकुलर country people, here the particular skin white skin peoples, उस साउथ अफ्रीका में ब्लैक स्किन पीपल भी हैं who are not in fair dark skin, you know, सांवले हैं, वीटिश हैं, बट फेयर स्किन पीपल, वाइट स्किन, जो बहुत ही गोरे थे, जिनको गोरे कहा जाता है, उन लोगों ने, तो इसलिए हमने in that case you can say in India also that you know पीपल्स ऑफ साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया ऐसा बोल सकते हैं लोग, लाइक पर्टिकुलर व्हेन वी मेंशन अबाउट दैट. South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अपने उन्होंने what did the fair-skinned people do? They whatever differences they had among them, जो गोरे लोगों के बीच में जो differences थे, they solved everything and they erected means establish, erected means create or establish. They established a system ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जात पात, स्किन के बेस पे, कलर के बेस पे उन्होंने रेशियल डोमिनेशन, डोमिनेशन मीन्स पूरा प्रभुत्व, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही लोगों के जो फेयर नहीं थे कलर में, उनके खिलाफ फेयर स्किन पीपल ने एक सिस्टम, रेशियल सिस्टम डोमिनेशन का, कि हम इन पे राज करेंगे, इस्टेब्लिश किया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, जो स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम पे उन्होंने, व्हाट दे क्रिएटेड फॉर्म, उसने क्या ढांचा बनाया, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, तो उसका बेस बना दिया जो बहुत ही हार्श, सबसे ज़्यादा हार्श, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़, और जो अमानवीय, इनह्यूमन जहाँ पे मानवीयता का, इंसानियत, देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी, द सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, उसका ढांचा बनाया उन्होंने और उसका बेस बना दिया सबसे जुल्म वाली, सबसे अमानवीय सोसाइटी जो पूरी दुनिया ने कभी भी ना देखी हो. नाउ इन द last decade of the 20th century, is talking about the last decade 1990 up to 2000, last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, एक आदमी के तौर पे his 8th decade means when he was between 80 to 90, 8th decade, 7th to 70 to 80, 7 decade, 60, 50 to 60, 6 decades, 60 years you have completed, and 17 is talking about 8th decade as a man. That system had been, now he's talking when he was of 80 years of age, he's talking about that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples. उसने बोला कि उस सिस्टम को जो अपने 8th decade में था, यानी 80 से 90 के बीच में था, उस पीरियड में उस सिस्टम को ओवरटर्न किया गया, मतलब हटाया गया फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज, और एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस्ड किया गया दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो हर तरीके के लोगों के राइट्स को, अधिकारों को और स्वतंत्रता को पहचानता है या उनको मान्यता देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के कलर को साइड में रखते हुए, चाहे वो ब्लैक हो, फेयर हो, वेरी फेयर हो, नो वीटिश इन कलर हो, डार्क कॉम्प्लेक्स हो, वेरी डार्क हो, डजंट मैटर. दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many others days. He's saying that this day, जो डे आया है बहुत ही मुश्किल से आया था, about
अनइमेजिनेबल, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिज पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, जिनकी कभी काउंट नहीं किया जा सकता है कि कितने लोगों ने काउंट और कभी रीपे किया जा सकता है, उनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता है उनके बलिदानों का। आई फेल्ट दैट डे, मुझे ही सेइंग दैट, मुझे उस दिन महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि उससे दूसरे काफ़ी दिनों में भी महसूस हुआ, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. He's saying कि I felt on that day and on so many other days also that I am not the alone. I am the sum total of all the those African patriot, देशभक्त, शहीद who had gone, जो मेरे से पहले जा चुके, मैं उन सब का एक सम टोटल हूँ। That long and noble line ended and now began again with me, जो उससे पहले patriots थे, those who were fighting for the against the apartheid system, that line ended and now that again began with me, वो फिर से मुझसे शुरू होती है। I was pained, मुझे बहुत दुख हुआ, and I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought here, my dear student, means done or achieved. So he felt pain. उसे बहुत, he is saying I felt I was pained, मैं बहुत दुखी था, दर्द में था, and that कि I was not able to thank them and they were also not there to see what their sacrifices had brought or done or achieved. जो उनके sacrifices से हासिल हुआ है freedom from that system, they were not there to see and he was not able to thank them, so he was in pain. Next paragraph, my dear student, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. So he's saying जो सिस्टम था, जो उसकी नीति थी उस सिस्टम की, अपार्टाइड सिस्टम की, उसने एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला ज़ख्म मेरे देश पे और मेरे लोगों को दिया था। All of us will spend many years, so it is not like that we have become free now, so it will, the pain of that wound or that wound will go away in months or 1 or 2 years. No, all of us will spend many years, if not generation. बोला कि अगर मैं generation नहीं लगेगी, पूरी की पूरी पीढ़ी नहीं लगेगी, but at least many years it will take, 5, 10, 20 years it will take recovering from that profound hurt, profound deep and strong, जो बहुत गहरा और बहुत अंदर तक जो ज़ख्म मिला है उस सिस्टम की वजह से, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा और बहुत साल लगेंगे। अगर पूरी एक सदी ना लगे, पूरी एक जनरेशन ना लगे, पीढ़ी ना लगे, लेकिन कुछ साल ज़रूर लगेंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. He is saying, but जो वो decades थे of oppression, अत्याचार के, brutality